Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. In today's video I am going to share two beautiful DIYs. One is the broken ceramic cup makeover idea and another is the pen holder. So without wasting any time, let's start the video. For the first DIY, I have taken this broken ceramic cup. Sometimes we find a broken ceramic cup in our home and we get upset. Well, don't despair. In this video, I am going to show you how you can repurpose those broken ceramic cup into beautiful planter. इसका जो है broken piece है, इसे मैं glue की help से attach कर लूँगी and next I am using cello tape to fill this broken area. नाउ आई एम यूजिंग क्ले। जैसे कि आप सब जानते हैं इसमें दो पार्ट आती है, एक हार्डनर और एक क्ले, एंड इस दो पार्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इस क्ले से कुछ फ्लावर्स एंड कुछ लिप्स क्रिएट करूँगी इस सिरामिक कप के ऊपर। क्ले पूरा ड्राई होने के बाद हेयर आई एम अप्लाइंग वाइट एक्रेलिक कलर फॉर द बेस। After trying base color, here I am using teal blue. अब मैं क्ले के इन हिस्सों को भी पेंट कर लूँगी एक्रेलिक कलर से। For the second DIY, I have taken this little glass jar and clay. Now I will make some clay strips. मैं इस बोतल के ऊपर क्ले से फ्लावर्स, लीव्स एंड हनी भी बनाऊंगी। My clay work is done. Now I am using white acrylic color for the base. बेस कलर
पूरा ड्राई होने के बाद मैं ये लाइट ग्रीन कलर यूज़ कर लूँगी। अब मैं क्ले के इन हिस्सों को भी पेंट कर लूँगी। So now it's ready. So this is all about today's video. I really hope you like this one. If so, please give this video a thumbs up and subscribe to this channel. Also don't forget to comment down below. Thank you so much for staying with me, and I will see you soon with another video. Till then, take care. Bye.